थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, एक ऐसी मेहमान जिनको मैं ट्विटर के ऊपर कोई 20-25 दफ़ा डीएम कर चुका हूँ, उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया, लेकिन हमने एक कनेक्शन ढूंढ कर फाइनली इनको रीच आउट कर ही लिया। आई नो दैट लॉट ऑफ यू गाइस हैव बीन सेइंग कि ब्रिंग समवन फ्रॉम द पुलिस सर्विस, एंड आई थिंक देयर कुड बी नो बेटर देन ASP Amna Baig. Ma'am, thank you so much for being part of the show. Thank you so much for having me. मैं थोड़ा सा conversation start करूँगा with trying to understand your journey, right? And if we could start off with your high school, कि high school आपने कहाँ से किया, कैसे किया, और फिर eventually what were the steps that led you to joining the police force? Because especially as a woman, it seems like कि पुलिस का हमेशा मैं as a citizen मेरे दिमाग में आते पता नहीं क्या सीन है, डरावनी लगती है पुलिस, you know, and joining that seems difficult. Being a woman and joining that is just like that's some serious guts in my opinion, कि जैसा मैं देखता हूँ. What were your thought processes and how did that trajectory sort of happen? Muzamil, so I come from a very conventional household, right. And like a lot of other women, my mother wanted me to get married, और उनका बस यही ख्याल था कि जैसे ही मैं BA कर लूँ तो मेरी शादी हो जाए, and that is how I grew up, and that is what I was told that my ultimate goal is. And फिर ऐसा हुआ कि बट मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक आई रिमेंबर कि ये मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं जितनी जल्दी शादी कर लूँ, इवन तो अब मेरी हो गई है, बट उस वक्त यही था कि नहीं, मतलब देयर शुड बी मोर टू मी देन यू नो जस्ट अ मैरिज एंड किड्स. एंड और ये थॉट मुझे इसलिए आता था बिकॉज एक तो जब हम सारे छोटे होते थे, आई रिमेंबर कि कज़न्स आपस में खेल रहे होते थे, तो कोई कहता था बड़े होके क्या बनना है, तो सब कहते थे कि डॉक्टर बनना है क्योंकि अब्बू डॉक्टर हैं, या इंजीनियर बनना है अब्बू इंजीनियर, या अब्बू आर्मी में है तो आर्मी में जाना है, राइट. बट कोई मदर्स का जिक्र ही नहीं करता था, बिकॉज मदर्स या औरतें रोल मॉडल होती ही नहीं थी, लाइक ईदर दे वर टीचर्स और नर्सेज, और कोई भी ये नहीं कहता था कि मैंने बड़े होके अपनी अम्मी जैसा बनना है. एंड दैट वाज समथिंग दैट स्ट्रक मी, बिकॉज व्हाई नॉट, very interesting. Yeah, why not? Never thought about it. Nobody, yeah. And I always said that, you know, when I eventually have a daughter, I'm a feminist at heart, so she must grow up to say that, you know, I want to do something that my mother is doing. It was this, and then the fact that I saw that my own mother was an exceptionally brilliant student, and she got married early, and वही उनके बच्चे थे etc. वो जो conventional household होता है. Even though my father is extremely supportive, he's the reason that I'm sitting here, but back then times were different, और उन्होंने फिर अपनी education continue नहीं की और family को support किया. तो मैं सोचती थी कि देखें, अभी भी मुझे ये ख्याल आता है कि इफ़ शी हैड बिन अलाउड और शी हैड बिन गिवन द रिसोर्सेज टू यू नो डू हर बेस्ट, सो मे बी उन्होंने भी काफ़ी कुछ ज़िंदगी में किया होता, और मैं नहीं चाहती थी कि आई डिड नॉट वांट टू ग्रो अप विद दैट रिग्रेट. तो बस कुछ ऐसे ही ख्यालात थे. बस फिर आई वॉज इन डिविजनल पब्लिक स्कूल पिंडी, एंड देन आई डिड माई मैट्रिक फ्रॉम हमजा आर्मी पब्लिक स्कूल इन पिंडी अगेन. And फिर I started my school, by the way, in Dera Ghazi Khan. My father was also a civil servant. Yeah, he was from the Pakistan administrative group. So right. जो DMG erstwhile है, और तो उनकी वजह से we were posted around. So I started my education in southern Punjab. लेकिन बस over the years. But you didn't go to a private school? No. My father could not afford a private school. He was a civil servant. So really? Yeah, he could not. And बस फिर उसके बाद FA किया FG कॉलेज कश्मीर रोड से, सदर से. And but then नस्ट में दाखला हो गया था, so नस्ट से डिग्री की इकोनॉमिक्स में. Right. And but I knew from the start that I wanted to join the civil service. और उसके बहुत सारे reasons हैं. One of the reasons, the main reason was that, as I mentioned, I come from a very conventional household. और जो एक सोशल लेजिटिमेसी करियर औरत की करियर के साथ होती है ना, वो हमारे ख़ानदान में समझी जाती थी कि शायद सिविल सर्विस के साथ ही है, इसके अलावा अगर आप कुछ करेंगे तो प्रॉब्ली यू नो व्हाट्स हैपनिंग. तो वो चीज़ें भी मेरी कंसिडरेशन में थी, इवन दो आई डोंट बिलीव दैट, बट दिस इज़ हाउ इट वाज. you're raised in a certain way, तो आपकी थॉट प्रोसेस उसी तरह होती है, आप जितना भी इसको कर लें. बिल्कुल जी. और मुझे यही था कि आई हैव टू डू माई बेस्ट विद वट एवर आई हैव. सो पेरेंट्स को मैंने कहा कि बस एग्जाम देना है. सो आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई फैमिली टू एक्चुअली क्लियर द सिविल सर्विसेज एग्जाम. Was it the first time? No, it was the second time. अच्छा. The first time I could not clear one exam. English composition में मेरे 2 नंबर कम थे. अच्छा, इंग्लिश में बड़े लोग फेल होते हैं, ये क्या वजह है? ऐसे में लोग ज़्यादा फेल होते हैं. कॉम्पोजिशन में भी हो जाते हैं, या होते हैं, लाइक दैट इज़ व्हेन बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे या कॉम्पोजिशन. अच्छा, वैसे मैं एक बात करता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात के ऊपर कि हम एक बाहर की लैंग्वेज के ऊपर जो है ना अपने लोगों को फेल कर रहे हैं. इंटेलेक्ट का तकाजा जो है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पे. मेरा पर्सनल ज़ाती ख्याल ये कि इंग्लिश शुड नॉट बी अ मैट्रिक टू गेज इंटेलेक्ट
when most of your country can't speak. I feel like there could be a very brilliant people who are just aren't able to make it just because of the fact कि वो English language में उतने ज़बरदस्त नहीं है. यहाँ पे मैं एक छोटी सी और आपसे गुजारिश करूँगी. बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ. मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने पब्लिक स्कूल से पढ़ा है, तो वहाँ पे इंग्लिश ना बोली जाती है, ना इतना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस होता है. जब मैं पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी गई, नस्ट मैंने ज्वाइन किया, तो यू मस्ट नो कि नस्ट में बहुत सारे लोग हेड स्टार्ट या बीकन हाउस या बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे इन प्राइवेट स्कूल से. एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट. घर में हम अपने गाँव की ज़बान बोलते थे, बाहर स्कूल में उर्दू बोलते थे, so मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी. और नस्ट इकोनॉमिक्स इज़ लाइक very very private school A levels. Yeah, it's all those people who could not make it to LUMS just end up right? Absolutely. So they were all those private school के पूरे cohorts आए हुए थे, बीकन हाउस के सारे, और फिर ये हेड स्टार्ट वाला ग्रुप है और ये etc. What year did you graduate in? I think I graduated. Yeah, I don't think I know I graduated in 2013. I started in 2009. Right. 4 years, yeah. Zabardast. So then you graduated and straight up you decided to go for your... So over the years, the 4 years I was in NUST, I worked on my English because I knew कि ना अंग्रेज़ी इतनी कोई लिखनी आती थी ना बोलनी आती थी. बस फिर उन 4 साल में ज़्यादा फोकस इसी पे था, एज यू सेड, क्योंकि एग्ज़ाम ही सारा उसके इर्द गिर्द है. बट यू आर राइट, एब्सोल्युटली, दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी. Right. And so you graduated and you decided कि भैया मैंने एग्ज़ाम देना है. Did you do self study or did you go for like a... so मुझे पता था कि मेरे सर पे शादी की तलवार लटक रही है, क्योंकि मेरी अम्मी बार बार मुझे रिमाइंड कराती थी कि दिस इज़ योर अल्टीमेट गोल. सो आई वांटेड टू कीप देम बिजी एज वेल. आपको पता है कि हर देसी पेरेंट का ख्वाब होता है कि उसका बच्चा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास कर ले. और क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद इस प्रोफेशन में थे, तो उनका तो बहुत ही ज़्यादा ये बड़ा ख्वाब था. और मेरे 2 भाई जो बड़े थे, उन्होंने बिल्कुल इस प्रोफेशन से डिसएग्री किया. उन्होंने कहा कोई तनख्वाह नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, हमने पब्लिक स्कूलों में पढ़ा है, तो वी वांट अ गुड लाइफ. सो दे वेंट फॉर मेडिसिन, और अब वो डॉक्टर्स हैं. तो अब्बू ने को जब मैंने कहा मैंने करना है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए. राइट. और वो मेरे पास होने से पहले सबको कहते रहे कि बस मेरी बच्ची पास होने वाली है. उन्होंने माइंड बना लिया था. दैट्स प्रेशर. दैट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर. I met a lot of people after I cleared my exam, and they're like, yeah, I met your father, and he said that she's almost taken the exams, it's about to happen. And I was like, okay, good, 100 marks. Thank God you passed. Absolutely. So मैंने मुज़मिल मैंने इसके लिए बहुत पढ़ा था, because I knew कि this is what I want. I wanted it wasn't I always wanted to join police because I had an idea about civil service because of my father. लेकिन it was never about कि बस उसमें जो है, मुझे ये होता था कि करियर आपका ऐसा होना चाहिए विच एम्पावर्स यू, विच गिव्स यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, विच गिव्स यू द अथॉरिटी विच यू नीड इन द सोसाइटी, एंड स्पेसिफिकली कंसिडरिंग दैट आई एम सुपर क्लोज टू माई फैमिली एंड आई वॉन्ट टू टेक देम अलॉन्ग. आई वॉन्टेड टू कीप दैट सोशल लेजिटिमेसी जो मेरे पेरेंट्स के जहन में थी विद द करियर दैट कम्स, उसको भी मैं साथ लेके जाना था. तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स कपल्ड, आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू सिट फॉर द एग्जाम. Right, and police was your first priority? Yeah. Abu was DMG, so I did not want to do that. I told him that's boring, even though he pushed me, he blackmailed me into it, but I got police. Yeah, because all of my friends were like, DNG and then foreign service and then police. And no, it depends. It totally depends from person to person. Yeah. Achha. That's not how it works. Right. So पहला दफा नहीं हुआ. You studied again. I went into depression. Achha. Yeah, I went into complete depression. It was only 2 marks, Muzamil. That just sucks. I was just like, what happened? Like, and then but I have a very supportive pair of brothers, and my husband, who's now my husband, usne tab he was my friend, and we were so he said ke bhai koi baat nahi, kuch nahi hota. So I had this group of people around me who helped me get out of that depression and take that exam again, because it takes a lot of strength to sit CSS. I think 6 hours a day. It's a lot, Muzamil. I would not want to go over that. It's not difficult. I must clarify it over here. It's not difficult, but it's a lot of studying to do. Yeah, and I think there's a lot of grit involved to study and to actually it's not for everyone. I think it is, like, if you want to, but it's a lot of commitment. Yeah. Okay, so then you finally you passed. You found out you passed, and what was that feeling like the second time when you finally क्या होता है online जाते हैं? I always wanted police. अच्छा, नहीं वो तो आपको बाद में पता लगा होगा. पहले तो एग्जाम पास आता है, you have to wait. उससे पहले मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, सब पता चल जाता है कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो और उससे 1 महीना पहले से रोज कहते हैं आज रिजल्ट आने वाला है, आज तो 1 महीना you die. आपको ख्वार करते हैं. Yeah. So जिस दिन मुझे याद है हमारा रिजल्ट आने वाला था, I was with my friends, and रिजल्ट आने से कोई 2 घंटे पहले बहुत सख्त किस्म का ज़िलज़िला आया, and I was already so
अल्लाह ताला का sign है. I was just like, this is a sign from God. But then, alhamdulillah, uske 2 ghante baad, I don't think I have ever felt better in my life. It is something that I always really wanted to do, and I had gotten it. So, I don't know, it was something out of this world, yeah. That's pretty amazing. आपने जो आप जब फॉर्म इनिशियल फिल करते हैं उसमें आपने प्रायोरिटी लिखते हैं. And then so you passed your exam and you went in for an interview. Yeah. Do they know in the interview कि आपने इसमें क्यों किया? Yeah, they ask you questions. Because sorry. You must ask me if they asked about the police, right? The police thing, I mean that's a very logical Pakistani society question. कि बेटा आप पुलिस में क्यों क्या कर रही हैं? Yeah, they asked me how will you do field? Yeah. So they don't particularly ask you about police, but they said how would you do field, because administration again is field and police again is field, and they said how would you do that? And I said my father did it. I saw him do it. Why can't I? Yeah, I don't think they'd ask the same question to a guy at the end of the night. Because I was just like, he did it. I saw him and I used to go with him to the work, and it's not something that I can't do. So why not? Yeah. And so that went well. My interview went really well. Right. Yeah, it went really well. Yeah. Zabardast. And then so getting into the police force, सबसे पहले आपका क्या? What's the first sort of position? Okay, yeah. So I'll make you go through the process that after your interview, after your final allocations, interview, psychological, blah blah. You go to the common train. You go through the common training program, which is the Civil Services Academy in Lahore, Walton Road पे है. वो बहुत पुरानी academy है, and I'm from the 44th batch of that common training. And उसके बाद 6 महीने की वो लाहौर में होती है. After that we come to National Police Academy right next to NUST. वहाँ पे 11-12 महीने की training होती है, which is physical, which is parades, which is PT, which is firing, which is academics, etc. etc. फिर वो करने के बाद आप चले जाते हो बेदियाँ लाहौर में. वहाँ पे elite school है जहाँ पे वो आपको SSG वाले training कराते हैं, full physical 42 days. To all police officers? To all the officers who have been inducted. And you have to... All, including outside of police as well? No, just exclusively the police. Okay. Because once you come to the National Police Academy, it's the specialized training which starts. उससे पहले सारे साथ होते हैं, but उसके बाद सारे अपनी trainings में चले जाते हैं. Right. So then it's the बेदियाँ training, and बेदियाँ training के बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है दोबारा, और उसके बाद आपकी एक अटैचमेंट होती है. आई वॉज इन गुजरात, आई वॉज पोस्टेड इन गुजरात ड्यूरिंग माई अटैचमेंट, और 6 महीने बाद, सो इट्स two-year process, and then you get posted. Yeah. And what's the first generally we get inducted as assistant superintendents of police, and once you take the charge, the officer is called a subdivisional police officer. Okay. Yeah. And what's the job like? So basically one of the questions, Muzamil, that I always get is आप औरतों वाला थाना चलाती हैं? Like this is the first question that comes to everybody's mind when they look at me. But no, that's not how it works. Whatever my male colleagues are doing, I'm doing. So मेरे under भी बहुत सारे थाने होंगे, 1 होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे. पिंडी में मेरे पास 5 थे, यहाँ पे मेरे पास 2 हैं. So depending on the subdivision, वो आपको हर subdivision के accordingly post कर देते हैं. So it's the law and order, it's the crime, it's the security, it's everything. Okay, so it's management of absolute supervision and management. Supervision and management. And so crime essentially आपका वो data metric भी चल रहा होता है कि भाई month on month इतना crime है, quarter on quarter इतना है, and you everything, make it better and you make it worse. Yeah. Everything. And so who actually ends up getting involved? Like जो वो जो CSI type shows होते हैं जिसमें वो जाता है कहते हैं murder मुझे लगता है इसकी वजह से हुआ है. Who are those people? They are us because I'm a newly inducted ASP. Not newly, but 17 grade पे जब आप होते हो तो you and your SHO, the subdivisional police officer and the SHO have to do everything. अच्छा. हाँ, like अगर मर्डर हो गया है, मुझे क्राइम सीन पे ज़रूर जाना है. मर्डर इज़ अ सीरियस क्राइम, हीनस क्राइम है, सो मेरा SP भी शायद आ जाए मेरे से जो एक सीनियर है. बट अदरवाइज हर मेजर क्राइम पे, हर हीनस क्राइम पे, जनरली हर क्राइम पे SHO और मैंने तो जाना ही जाना है. सो इट्स अस एक्चुअली क्वेश्चनिंग करनी है, एविडेंस का बताना है कि क्या कलेक्ट करना है, इंटरोगेशंस करनी है, डेटा एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, डिसाइड करना है, रेट्स करनी है, ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दैट. या How much of that have you done in the past? How many years? 4 years? 3.5 years. Yeah. आपसे लोग तंग करते हैं लोग आपको इस तरह के कोई बताएं, कोई ग्रूसम सा कोई वाकया सुना है? लोग भी कहते हैं कि आपको पश्तो आती है, बोल के दिखाएं, तो लोग मुझे जब देखते हैं तो because it's fascinating, right? Like you talk to a police officer that you know. Police officers are generally very intimidating, but you talk to I'm a common man. That's my thought process. But when someone knows you, तो automatically वो आएंगे कि चाहेंगे कि कोई juicy story निकले.
I don't want a juicy story, but I'm just trying to understand कि what is it generally desk okay ठीक है चले गए जाके बताया अच्छा ये कर लो या has there been times when you're just like यार I mean today was a bad day? Yeah. So Muzamil, it does take a toll. Like the work takes a toll on you because you're constantly dealing with negativity of sorts, right? It's crime, it's people coming to you crying in distress. You're seeing a lot of things which, I think unconsciously impacts you. And I feel that I have changed over the years. And I'm sure all the police officers do. And at one point, I think everybody needs therapy as well. But the thing is कि फ़र्क पड़ता है आपको. There are times, बहुत सारे ऐसे cases हुए हैं जहाँ पे थोड़ा सा आप emotionally involve हो जाते हो. I remember there were few cases of child abuse where I was extremely, even though I am not a very expressive person in terms of my emotions, and I do not like to talk about my work in the sense that, oh, it's doing this to me or it's doing that to me. I love my job. It's extremely interesting. I would not give it up for anything in the world. However, yeah, it does have its toll and it does come with an opportunity cost. You miss out on family functions, you miss out on so much of your social life, you miss out on your personal life because you're 24/7 at work. However, yeah, there are cases where you for a minute just sit down and think and you go like, wow, okay. Yeah, because what I'm thinking is, there's a case or two आपको नज़र आता है पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान का दिल रोता है और वो कितना traumatizing होता है. And then you have to go through these cases day in, day out. Either you have to really sort of become so emotionally intelligent कि आपको एक दीवार बनानी पड़ेगी ताकि आप objectively एक चीज़ को perform कर सकें, वरना it's I mean I don't think it's humanly possible for a person to deal with that day in day out. And that's why I'd like to ask पाकिस्तान के जो आपके पुलिस फोर्स है उसके अंदर is therapy a thing or is there an effort towards making it a thing? Now it is. The senior officers, there are two, three issues which, now the senior officers, and I'm कुछ issues पहले से भी और कुछ issues अब because awareness ज़्यादा होना शुरू हो गई है, and mental health is one of them. Our seniors do think about these things कि भाई किस तरह से working conditions बेहतर बना सकते हैं because they are in the leadership positions, right? So they have to decide. इसी तरह से जेंडर के इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है irrespective of what the perception around in Pakistan around the police force is. लेकिन before joining the force I was also like one of those keyboard warriors writing bad things कि ये गलत हो गया वो गलत हो गया. But after joining the service I realized कि जितने minimal resources हमारी पुलिस फोर्स के पास हैं in terms of financial resources and human resource भी हम बहुत stretched हैं और उसमें जितना इनपुट हम दे रहे हैं, जितने वर्क आवर्स हम पुट इन कर रहे हैं, जितनी एफर्ट हम पुट इन कर रहे हैं, आई डाउट के उसके साथ जो एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स हैं वो कोई और दे सकता है. एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. इट्स जस्ट दैट अ लॉट ऑफ इट इज दिस थिंग दैट यू थ्राइव around negativity, right? People don't want to talk about very happy things like what was solved and what was done good, but there is so much that these jawans are putting in, these officers are putting in. You have no idea. They have sacrificed. There are so many shahadats. मेरा अपना SHO recently we had worked so closely and as I said मेरा अपने मतलब because I'm in the SDPO level और SDPO और SHO का बहुत ज़्यादा काम साथ होता है. SDPO is सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, right? So I'm in that position और आपका बहुत ज़्यादा अपने SHO के साथ अपनी जूनियर रैंक्स के साथ बहुत ज़्यादा रब्ता होता है. 24 घंटे आप उनके साथ काम कर रहे हो तो इट्स लाइक अ फैमिली. ठीक है, इट्स मुझे पता है कि क्या है, कौन कैसा है, किसके साथ क्या करना है. रेट्स पे आप साथ जा रहे हो, पूरी रात बैठ के क्राइम डिसाइड कर रहे हो कि क्या करना है. सो उसमें व्हेन यू लूज अ टीम मेंबर. Can I ask क्या हुआ था? So he embraced shahadat. He was shot by this person who he had actually arrested. Okay. So he was just shot in front of his wife and kids. So, and I know how close he was, and he was also a son of a shaheed. His father was martyred before him in the same police station. He was the SHO of the same police station. So इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं and it's just like you lose a brother. Like it's the feeling I can't explain. You can't shake off the feeling looking at his children who are like 8 or 10 years old. Like, so you're risking your lives. You don't know who's going to come back and shoot you. And sometimes even for the most menial things, like दिमाग फिर जाए आपका और जी बस मैंने मारने जाके. Because it's risk, right? You're taking sort of a risk. So ये सारी कुर्बानियाँ, ये सारी चीज़ें भी highlight होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली फोर्स क्या कर रही है. 100%. मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि I'm gonna dive into this थोड़ा सा because we do have someone else coming in next week and I think we'll have a better discussion on this with him. But you're in Islamabad right now. मुझे ये पता था, I was talking to Hamza and he told me कि Islamabad police hasn't really grown in terms of resources over the past at least a decade. And decade and a half at least.
एंड उसके अंदर is that true? Like बिल्कुल भी resourcing नहीं बढ़ी? No, I would like to disagree over here. We have, there are a few things that I would want to talk about. Right. And I hope I can raise awareness around them through this platform. और उसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि resources में, there have been major improvements. काफ़ी सारी चीज़ों में, एक तो the current IG is extremely visionary. He's very open to the ideas. He's very open to initiatives. तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं और उसमें हम लोगों ने resources हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे मिले हैं. फॉर एग्जाम्पल में हमने रिसेंटली एक ईगल स्क्वाड जो है वो लॉन्च किया है. 100+ बाइक्स जो हैं, दे विल बी गोइंग अराउंड इस्लामाबाद विद द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, गैजेट्स हैं उनके पास, सारी चीज़ें हैं. इसी तरह से वी हैव एस्टैब्लिश्ड जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट रिसेंटली, और इट्स अ टोल फ्री हेल्पलाइन 8090. सो इस्लामाबाद में कहीं से भी आप कॉल कर सकते हो. So okay, so can you tell me a little bit about this, because I feel like this is very important, and it's called Gender Protection Unit. 8090 पे you can It's call. the toll free helpline. Okay, and what's the thought behind that? Okay, so I'd like to talk about why women in police are important, and it starts from when I joined Punjab Police 2-3 years ago, and after a few months, because I was the first police officer to be posted in that subdivision ever. First police officer? Sorry, female police officer. Okay. Ever. So it had been going on for like 40-50 years, and I was the first female officer. They'd be very confused कि ये क्या game चलेगा. But it's a good case study, because what happened was कि 3 months after, my staff came to me and they're like, "Madam, we've noticed that a lot of female complainants are coming in who did not when they were male officers." So that got me thinking that yes, जो हम पहले कहते थे ना कि औरतों का होना बहुत ज़रूरी है, वो एक्चुअली ज़रूरी है. ठीक है, women feel more comfortable speaking to women. Right. And that is when I started thinking about, and I had started using social media as well. So I was getting a lot of complaints through social media. Right. Ladies from all over Pakistan were just inboxing me कि ये हो गया है, वो हो गया, can you help this, can you help that. So that got me thinking that, and you know, there was a very interesting phenomena that जब मैं कहती थी कि yes, we're going to provide you help, so can you come in, they would say कि can you do it over the phone, we don't want to come to the police station, because there is a taboo attached with women going to police station in this country, right? And that's when I realized okay, so they are not comfortable coming in, so we have to find a solution around that. अब मैं सबकी जाके सोच तो नहीं बदल सकती. फिर we started this helpline where the idea was, I had an excellent boss, Sir Hasan Yunus. I'd like to mention him here. I think most of the policing that I have learned in my life is through him. और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया. He was an enabler, and उन्होंने जो मतलब फजूल आइडिया मेरे जहन में आया, मैंने कहा सर ये कर ले, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं. उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप ट्राई करो. So I think उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, and empower किया उस तरह से. और he made me who I am today as a police officer. So उनसे मैंने बहुत सीखा. So it was first in Pindi that we started this. Right. And I told sir कि सर मेरी अपना एनालिसिस जो साल डेट का है वो ये है कि औरतें पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहती, चाहे वो women police station भी है. We had a female police station. So what we need to do is we need to have a helpline where they can call, and our female police officers respond to wherever they are. Instead of the थाने की गाड़ी जाए, it should be a female unit. Right. So we did that in Pindi, and it did brilliantly, and sir was kind enough to provide me with all the resources, and we set it up, and बहुत अच्छा वो हुआ, and we had a good response. So when I got posted to Islamabad, so we replicated over here. So यहाँ वाली facility में we have a walk-in as well. So it's not a police station. I'd call it a service center. Okay. So it's in F6. The new one, the new building. Yeah. Right, so it's in the basement of that. You can walk in. It's 24/7. The helpline is 24/7. The walk-in facility is 24/7. It has counters, so you can just give your application if you walk in, or you can just call. Our team of female officers will come to you, and they will do the handle whatever is needed. And so is it specific to gender issue, or is it specific? Is it potentially any crime? No, it's to be honest, it's for the women of the country and the transgenders and the children, those vulnerable segments who usually find it difficult. No. So what I'm sorry, मैं आपकी बात कर रहा हूँ. What I meant was, for the women, are they reporting gender-based crime there? Everything. Or are they every crime, every potential crime? Everything. So this is like if they're ever feeling scared कि यार मेरे साथ कुछ हो रहा है, चाहे वो gender related हो, चाहे वो किसी किस्म का भी हो, this is the place that they can go to, जहाँ पर आपको एक safe space मिलेगी और वहाँ पे ख़वातीन आपसे डील करेंगी. Because I remember this recently, I got क्या था यार, Instagram के ऊपर I got this DM. मुझे उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ इसको कर दें, किसी तरह डालें. नेक्स्ट की एक लड़की, she was living in a hostel. And she was like, my warden beats me up, and मैं उसको रिपोर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन she's a constable or something in the police. So what do I do?
And I feel like this is the sort of place where she could have potentially just like कोई उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए थी, किसी थाने में नहीं जाना चाहिए था. ये एक सेंट्रल जगह है जो कि एसेंशियली उस पूरे को सॉल्व करेगी. एब्सोल्युटली फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड. और मुजम्मिल, इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं. वी हैव बीन सो वी स्टार्टेड अ मंथ अगो एंड वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड ओवर 130 प्लस कंप्लेंट्स एंड वॉक-इन्स. और उसमें वी हैव कंप्लेंट्स सच एज नेबर्स ने कॉल किया कि साथ वाले घर में एक हस्बैंड अपनी बीवी को मार रहा है, उसका शोर आ रहा है. सो आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ. This is great example that you've given me. So this happened, something that happened with me. You've just come here, right? बिल्कुल सामने वाला घर है. Husband used to beat his wife every single day. Yeah, you could hear it. ठीक है, you could hear it. Called the police. Dala came, said, not our problem, went away. What's the science behind that? No, so basically, next time when you hear something, that's what I'd like to say, just call our helpline. Okay. 8090. Our female police officers will come and they would handle. Because they're sensitized to the issue, na? Like this. No, so basically what happens is, Muzamil, I'd like to clarify, not everything is police's jurisdiction. Okay. All right. So most of the times what happens is कि थोड़ी सी ना awareness की भी ज़रूरत है. लोगों को नहीं पता कि पुलिस की क्या डोमेन है और क्या डोमेन नहीं है. Right. So if we go and knock at the door and somebody's like, oh, I don't want to complain. Right. ठीक है. So then we can't do anything about it. मतलब जनरली. बट मैं सिर्फ प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ. मैंने जो कंप्लेंट की थी ना, उस पर मैंने ये कहा था कि बीवी को मारा है. बीवी ऊपर ही थी, हस्बैंड केम डाउन और उसने बना कर दिया और वो चला गया. हाँ. बट अब मैं आपको बताती हूँ इसमें टेक्निकली हाउ द जेंडर यूनिट इज गोइंग टू हेल्प. द जेंडर यूनिट कंप्राइजेस ऑफ लेडी ऑफिसर्स. लेडी ऑफिसर्स कैन गो इन. Oh, they can ask. So there's a technical. Yeah. So the man can't go in. मतलब वो आदमी का कि अंदर मेरे बीवी बच्चे हैं, so the man cannot go in and search, right? So generally हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि जब खातून होती है तो खातून कैन गो इन. दिस इज स्टेप वन. दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल से इवन अगर बीवी को एक हस्बैंड मार रहा है और बीवी हस्बैंड के डर से कह रही है कि मैंने पुलिस को नहीं रिपोर्ट करना, लेकिन जब एक खातून पुलिस ऑफिसर आएगी तो उसकी साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट होगी. 100%. शी वुड बी प्रॉब्ली मोर कंफर्टेबल इन सेइंग कि नहीं मैंने करना है. सो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए हमने ये यूनिट जो है वो स्टार्ट किया था. चलें, that's pretty amazing, and I hope that this is I hope the results are great. Will you ever make it public कि क्या results वगैरह did? Yeah, so we as I mentioned कि अभी हमारा 21st June को first पूरा month complete हुआ है. We were waiting for a month to complete, so we have some data to play with, and alhamdulillah, as I mentioned, अभी we are working on it. This weekend we will be releasing the data. ज़बरदस्त. I look forward to that. थोड़ा सा मुझे अभी ये बताइएगा कि you know, I mean, so you were talking about reforms essentially, and you talked about the gender, this particular helpline, और मैंने आपको वहाँ पे रोक लिया था. और कोई मज़ीद if you'd like to talk about it? So there are a lot of things that we have done. So for example, Islamabad Police, अभी हमने एक generally यहाँ पे एक और चीज़ हमने देखी, because हर एरिया के अपने डायनामिक्स होते हैं. और इस्लामाबाद, because I'm posted in कोसार, और आसपास आपने देखा है बहुत सारे पार्क्स हैं, ट्रेल्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ से हमें कंप्लेंट्स आ रही थी हरासमेंट की, कि हरासमेंट हो गई या कुछ मसला बन गया. अब पार्क्स के अंदर जो है वो हमारी मोटर बाइक्स को एक्सेस नहीं होती, उस तरह से हमारी पुलिस मोबाइल नहीं जा सकती. तो वी स्टार्टेड अ बाइसिकल पेट्रोलिंग यूनिट. Oh, interesting. Yeah, so because we saw that a lot of people were walking on Margala Road. शाम के टाइम में शालीमार ग्राउंड में होते हैं, ट्रेल्स के ऊपर इतनी सारी लोग आए हुए होते हैं, और उन जगहों पे हमारी जो मोबाइल्स हैं या फिर हमारी मोटर बाइक्स हैं वो एक्सेस उस तरह से अंदर नहीं होती. सो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे वी आर ट्राइंग टू फोकस. फॉर एग्जांपल, इसी तरह से IG साहब का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. ही स्टार्टेड दिस पुलिस गाइड्स के नाम से है, बिकॉज फॉर एग्जांपल अ कॉमन मैन गोज टू पुलिस स्टेशन, ही डज नॉट नो हु टू गो मीट. कैसे रिपोर्ट करना है, क्या करना है, मुझे नहीं पता, आप क्या करोगे, right? So the police guide is sitting at the very front, and you meet him and he will explain. You say कि अच्छा मेरा ID कार्ड गुम गया है, मुझे मिसिंग रिपोर्ट. he'll help you through the process. Right. So इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे हमें नीड बेस्ड एनालिसिस सा हुआ और नज़र आया कि जहाँ पे गैप्स हैं उसको फिल इन करने की हमने कोशिश की है. जी. Right. Are you digitizing the system as well? Absolutely. We are in the process. As you mentioned, another police officer is going to come on your show. He will explain how we have shifted from like our regular mechanisms to IT-based policing, or inshallah he'll tell you everything in detail. Chale, sounds good. अच्छा, एक चीज़ have you seen Brooklyn Nine-Nine? Yeah. मैं सोच रहा था कि as a police officer, what do you think when you watch something like that? US based या बाकी उनकी पुलिस के हो? I'm a big fan of comedy. I love comedy. I think I live for comedy. Yeah, so I love it. Right. So उसमें a lot of what they show is, the policing, they show that, yeah. but they also show the legal aspect of it. Yeah. And in Pakistan, we hear a lot of this, like, oh, jail gaya, और फिर वो छूट गया. And as a layman, my understanding is that
the police is basically responsible for providing the evidence to make sure that he eventually ends up staying in prison. Do you think there is a gap between the laws that have been made and the capacity of the police to provide the amount of evidence required to actually prosecute someone? As I mentioned, Muzamil, I think of course, there is always room for improvement in terms of laws, etc. But generally, I feel that I think it comes down to resources, and it comes down to human resources in particular. So I feel that sometimes our police is overstretched. Right. So this one inspector or sub-inspector or ASI has to write his case file, he has to arrest the person, he has to go for the DNA, he has to do the law and order duty, he has to do his duty officer duty, he has to do the gasht as well, और उसके पास कोई 50-60 cases भी हैं. So उस तरह से of course quality जो है वो compromise होना शुरू हो जाती हैं, and we can I've always been very vocal about this, that we can use more police officers. We are extremely stretched when it comes to human resource, और उसमें of course फिर then it starts impacting your work. However, it's not just the human resource. Of course, इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस हैं, या फिर आपका कोई और ऐसा एविडेंस है जो कि probably the officer is not trained to handle, या फिर then again the courts, the attitude of courts as well, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें, because it's a criminal justice system. So we are the start, but then there are a lot of other processes that the person has to go, the criminal has to go. So वो जब तक complete नहीं होते, and then finally and most importantly, Muzamil, the people who are involved. So most of the times you must have worked hard on a case, you must have tried your best to ensure something goes to trial and conviction is ensured. However, what would happen would be that the parties would compromise. So for one reason or another, I'm not blaming them, I'm just saying कि फिर वो चीज़ें भी हैं, things that we need to look into when we talk about conviction rates. Makes sense. Islamabad का एक बहुत major problem ये आ रहा है कि there seems like a drug epidemic, in our young kids. Drugs seem quite easy to acquire, to be very honest. Why do you think that's happening, and what is being done or can be done to prevent that? Muzamil, again, it is one of those things that, that's always on our minds, and, we are trying our best to stop the supply at every possible end that we can. लेकिन उसमें Muzamil, I feel कि responsibility सारी community की होती है. Police in itself काफ़ी हद तक कर सकती है, but then again your police is from the community and the community is from the police. As long as community आपको support नहीं कर रही, community forward नहीं आ रही, community help नहीं करी, तो police itself cannot do much. Like data भी community लाके देखना कि यार ये नहीं. So basically उसमें कहने का मकसद ये है कि what we see is that a lot of supply going around in institutes. Like education institutes. So again then उनके साथ coordination, उनकी तरफ से कोई हमें, अब फिर उसमें ये होता है कि everybody, it comes down to कि name saving होनी चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, नाम नहीं ख़राब होना चाहिए, हम ये चीज़ मीडिया पे नहीं आना देना चाहते. So ये सारी चीज़ें भी coupled with, of course there are issues related to how police is not doing enough, etc. But ये सारी चीज़ें, कहने का मकसद ये है कि ये मिल के होने वाली हैं, और इसमें इवन दो सप्लाई के ऊपर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे कि हम काम करेंगे, बट इसके साथ साथ बच्चों की अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वी नीड टू टेल देम the harmful side effects of whatever they're doing, and especially the parents need to step up. हमारी societies में ना usually parents are not very close to their kids in terms of इस तरह की personal चीज़ें. If a child is going through something personal and he has been addicted to something, there needs to be somehow a community-based effort towards this drug problem that we have right now. Right, makes a lot of sense. Amna, I know for a fact that you're a stand-up comedian as well. What was the thought behind that? Because I am trying to reconcile these two, this incredibly powerful police aura that you have, and then stand-up comedy, right? So how did that happen? So basically, as I said, that my work is very I'd say challenging, and it brings a lot of, it's very empowering too, but then again it's very draining as well in terms of emotional drain है, physical drain है. Right. और उस तरह में, उस सारी सिचुएशन में अगर थोड़ा सा मजाक ना हो तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी. और मैं तो I know people like to say that I'm a Twitter star somehow, Twitter celebrity, but I have to clear it out.
I am only on Twitter for memes, and I only joined it for the jokes because I think Pakistanis have a great sense of humor. Yeah. And मैंने तो सिर्फ इसलिए join किया था, and now it has become something else. But yes, I definitely enjoy. And there are a few. There's this a few comedians that I really enjoy. Pakistani comedians that I would want to give a shout out to. Right. उसमें अकबर चौधरी है from Karachi. Right. I don't know if you know him. Yeah, He is absolutely brilliant. And if Akbar is hearing that, hi Akbar. I'm a big fan. And उसके बाद we have Seher Tariq from Auratnak Right. In Islamabad का जो troupe है उसमें है वो. Then we have a lot of brilliant people, and I definitely enjoy comedy because trust me, I cannot go on with all of this without comedy in my life. Yeah. Right. Do you think there's an industry of comedy? क्योंकि इंडिया में बहुत मैच्योर हो गई है with Netflix, with all of that. पाकिस्तान में somehow lack की है. I think now it's growing. मुज़म्मिल, अब हम देखते हैं ना, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, मीडियम्स अब जो है इंस्टाग्राम का मीडियम बहुत ज़्यादा चल रहा है, यूट्यूब भी आ गया है, पहले फेसबुक था बट नाउ एवरीबडी हैज़ शिफ्टेड ईदर टू ट्विटर और इंस्टाग्राम, विच आई थिंक इज़ ब्रिलियंट. सो ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे वी हैव पीपल, IGTV होता है एक, उसके थ्रू पीपल आर पुटिंग अप वीडियोज़. तो आई थिंक इट्स ग्रोइंग, इट इज़ स्टार्टेड एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट इट हैज़, एंड आई सी अ ग्रेट फ्यूचर फॉर देम. 100%. सोशल मीडिया का भी हमारी बात हो रही है, एंड इसके ऊपर आई फील लाइक दिस इज समथिंग जो कि इट्स अ न्यू थिंग. And I'm personally a huge proponent of social media. I'm a huge proponent of the access to information and how social media has allowed that, right? There's a conversation. There's been a conversation around public servants using social media. मैं आपको अपना opinion बता देता हूँ, and I'd like your thought on that as well. I personally think कि I've seen your profile, I've seen Hamza's profile, and I see these profiles, particularly अगर मैं पुलिस की बात करूँ, I've seen like there are a bunch of you out there that keep on retweeting each other as well, but you guys are very active. Like I found a new, जिसका एक digital policing है, एक मैं कहूँगा digital community policing एक आई है, जो कि like people keep on flagging, listen, this is happening, this CCTV camera. I remember 2-1 दिन पहले ही मैंने कोई देखी थी इसी तरह से कोई तस्वीर गुजरावाला वाली, वो जो गुजरावाला का यूट्यूबर था. I mean that literally happened on Twitter. Right? Like someone just popped it up and they were like, then people started tagging, listen, can you look into this? Then a bunch of people tagged a bunch of other people, and then 3-4 hours later the guy was behind bars. So I think that's incredibly powerful where we're going in terms of the intelligence sharing, like the real time intelligence sharing, and people are just finding it and you're able to do that. And then beyond that as well, I feel like मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था पुलिस फोर्स के बारे में, and through Twitter, through a lot of what you guys are doing, मेरे पास एक एक्चुअल डेली के हिसाब से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि यार नहीं ये भी चल रहा है सारा का सारा. एंड द फैक्ट इज कि इफ देयर आर इफ 20 क्राइम होना है आज, उसमें से 10 क्राइम रुका है, तो मैं सिर्फ 10 को ना देखूँ, मैं जो 10 रुका है उसको भी तो देखूँ ना, ताकि मुझे समझ आए, मुझे कॉन्टेक्स्ट मिले. आई एम एबल टू ह्यूमनाइज अ लॉट ऑफ व्हाट यू गाइज आर डूइंग. सो आई पर्सनली थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, द वे दैट द generally overall CSP officers have started using social media, but I'd like your thought on that as well. Muzamil, like you said, I mean, for me, it was never about me. It was always about the department. It's still about the department. If you go through the things, it's mostly about, I try my best to highlight things, how we have, as I mentioned, one of our brothers got embraced shahadat, and then we have female police officers. I like to highlight those human sides of, police. But generally the idea was, I'll tell you how it started for me. One of my batchmates, Farhan, is extremely, he's a feminist, he's an extremely good guy. मेरा पुलिस में बैचमेट है, और उसने मुझे, जब हम नेशनल पुलिस अकेडमी में थे, उसने मुझे कहा कि आमना कोई इशू होगा था, आई डोंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड, एंड ही इज़ लाइक कि आमना इतने सारे लोग जो है ना वो ट्विटर पे पुलिस को जो है वो बहुत बुरा भला कह रहे हैं, एंड हमारी साइड ऑफ द स्टोरी कोई पुट ही नहीं कर रहा, नोबडी इज़ टेलिंग देम व्हाट वी थिंक अबाउट दिस, राइट? सो इज़ लाइक प्लीज़ ज्वाइन, और तुम जो हो ना, लेट्स जस्ट, ही इज़ वेरी इमोशनल इन दैट सेंस. पुलिस उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी है, और he takes it very personally. So anyways, he asked me to join Twitter, and I had made an account in 2009, but I never knew how to use Twitter. Twitter was for people with brains, right? I had none. But so बखैर मैंने join कर लिया, and then and I realized this there was a gap. This is the gap that you just identified, that in the community which was looking for answers was not getting any. Right. And they wanted to connect, but there was nobody to connect to. Yeah. And I feel कि पुलिस का सबसे बड़ा मसला इस वक्त सिर्फ perception है.
Yeah. ठीक है, इट्स अ लॉट ऑफ गुड वर्क बीइंग डन. और उस परसेप्शन में आई फील कि एक्सेस टू जस्टिस को इनडायरेक्टली वो इफेक्ट करती है. बिकॉज एक औरत पुलिस स्टेशन इसलिए नहीं आती बिकॉज उसको लगता है उसमें सारे मर्द बैठे हुए हैं और पुलिस स्टेशन का पता नहीं क्या हाल होगा. जब एक औरत को ये पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में एक औरत भी बैठी हुई है और पुलिस स्टेशन एक नॉर्मल पब्लिक प्लेस है, तो उसके लिए वो अवेयरनेस है. सो सम हाउ दैट इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एक्सेस टू जस्टिस एंड मेकिंग इट ईजियर. सो मैं इसको इस तरह से देखती हूँ. और मैं देखती हूँ कि जितना हम पुलिस की इमेज के ऊपर काम कर सकते हैं सोशल मीडिया में, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सेस टू इट, आई डोंट थिंक कि किसी और मीडियम पे इस वक्त आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं. And I think the access to information and the transparency that you're essentially achieving as well, right? Like कोई incident होता है and I'm on Twitter, I'm trying to look at one of you guys to sort of contextualize what happened, and statements come much later, they're very worded in a certain way, but what we're reading on Twitter sort of makes us, okay, something's happening. And something is being done. Something is being done, and that, honestly, that's 90% of the emotion. Yeah. Because I'm sitting 2,000 miles away from the actual incident, I can't do anything. Yeah. तो वो जो चीज़ होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. I'd like to take the conversation a bit towards financial independence. You talked about that, and I talked a lot about that on the podcast as well. I think I personally am a strong proponent of, I mean, हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान को हमने बेहतर करना है, अमीर करना है, ये सारा कुछ करना है. You can't make that happen if 50% of your, essentially, your population is outside of the productivity markets, right? Can you tell me a little bit about what financial independence means to you? I think it means everything. I mean, it makes me, I have always felt that because as I mentioned कि मैंने जब बड़े होते हुए मैंने देखा कि जिन घरों में कुछ एक दो औरतें कुछ थोड़ा बहुत कमा रही थी, या टीचर्स थी, या नर्सेस थी, या डॉक्टर्स थी, अपने आसपास ही, उन औरतों की ना घर की डिसीजन मेकिंग में से थी. ठीक है, और बिकॉज दे वर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. एंड आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी एंड द पेट्रियार्की that exists, and one of the reasons is that there is a vicious cycle of dependency on the men by all these women, because उनको वो opportunity ही नहीं मिली होती ही to break that cycle and come out and have their own lives. So most of the times even मैं अपने काम में भी देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाते हैं, वो ख़वातीन चली जाती हैं सीरियस इश्यूज़ में. वो आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन दैट डॉक्यूमेंट्री बाय शर्मीन ओबैद, गर्ल इन द रिवर. उसमें शी इज़ शॉट इन हर फेस, शी कुड हैव डाइड, बट इवेंचुअली शी कॉम्प्रोमाइजेस बिकॉज देयर आर सोशल प्रेशर्स. सो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें औरतें इवेंचुअली कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं. एंड द ओनली रीज़न मुज़म्मिल इज़ दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. And that is why I feel कि उनकी identities are totally dependent on the man in the house. Right. तो उनकी अपनी कोई say ही नहीं है किसी चीज़. So then it's a very hit or miss ना. अगर आपका है कि वो मर्द अच्छा निकला है तो सेट है, मर्द बुरा निकला है तो जी आप कुछ भी नहीं कर सकते. Absolutely. And you're tied down. Absolutely. And so to sort of extend that, and I know for a fact, because more often than not I try to sort of understand. I mean, it's a very basic concept. Financial independence, equality. Anyone who has a basic human mind, तमीज़ का बंदा जो है ना, वो इससे डिनाई नहीं करेगा. So I really try to sort of contextualize and understand कि why do people oppose it. There is a sizable audience जो oppose करती है. Why do they oppose it? And I've learned that more often than not, either they're not aware of the incidents. The benefits, yeah. No, not the benefits. Of the negatives that are happening. So I see a lot of people in their own silos. यार आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, लेकिन 22 करोड़ की कौम के अंदर सिर्फ आपकी फैमिली तो नहीं है ना. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है. And so I do understand where they're coming from, because they're in such a bubble कि they're like, यार ये पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, और ये पता नहीं किसके ये कह रहे हैं कि हमारा ये साफ सुथरा अच्छा खानदान है, इसको चेंज होने की ज़रूरत है. नहीं, आपकी बात नहीं हो रही, बात उनकी हो रही है जिनके साथ होता है. So I'd like to ask, because you probably are at a position where you hear a lot of these incidents. Like, can you share for the audience कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है? मुज़म्मिल, as I mentioned, बहुत सारे जेंडर बेस्ड वायलेंस के GBV के केसेस, be it rape, be it domestic violence, be it I'd say some other sort of abuse or harassment, they eventually go down to reconciliation. And that is what, I don't have figures, so I'm not going to quote anything, but generally जो मेरे अपने experiences हैं और जो मैं अपने बैचमेट्स से डिस्कस करती हूँ, most of them go towards reconciliation. What is the reason? One of the main reasons is that the woman does not have support. So अगर वो अपने शोहर से मार खा के severely I remember पिंडी में मेरे पास एक केस था, and the woman walked to me. She could barely walk, Muzamil. She walked to me and she's like, my husband shot me 4 times. I survived. And can you help him get arrested? So
he had shot her. Like she could have died. She just survived because she, like, uske पेट में 1 inch से वो गोली बच गई from her liver to, you know. So and then eventually it was pushed towards reconciliation. How can you go and live with someone? She said, I don't have clothes. He took all my clothes and my things. I have nothing. Where would I go? So she went to her father. The father, she had 3 kids. The father was very old. She came from a lower middle class family. Yeah. She had a brother living in that house with his wife and kids. So how can you imagine? She said कि अभी मैंने वकील को 10,000 रुपए दिए, अभी 50,000 रुपए दिए, अभी हमारी तारीख नहीं लग रही, अब ये हो रहा है. So can you imagine what she's been going through? She's like, अभी मैंने 2 जोड़े सिलवाए हैं. And and then after a month or so, when she was a bit better, she's like, can you help me find a job? Yeah. She asked me that, Muzamil. I still have that message. She said, can you help me find a job? Because how am I supposed to survive? Yeah. So this is where I feel कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना, वो आपको इन सारी चीज़ों से बचाती है. Right. आपको वो आपके राइट्स जो है मेच्योर होने में हेल्प करती है. Yeah. Makes sense. Makes a lot of sense. This is a question that I ask generally everyone. How do you see Pakistan of today? What's your feeling about Pakistan of today? I think we are born in good times, Muzamil. I think I always say that to my parents and my mother that, you know, I feel lucky enough to be born in a society where we have a lot of mediums to express ourselves. We have a lot more opportunity. I'm talking about myself as a woman. Right. We have a lot more opportunity than what our mothers did. And I feel that we are progressing. People are more aware, not just women, men are more aware about the women's rights. And I feel generally we are in transition towards a better society and in terms of gender equality, peace, security. And I feel that we all are somehow contributing towards that better future that we are looking towards. And I think everybody's doing a brilliant job. 10 years ago, I had nobody talking about my rights anywhere. But now I see a lot of women standing up for me, not just women, men. Right. And I do the same for them. So I think the world that we are creating for our children, I think we are pushing for a better world and a better Pakistan. And so if I'd ask you, you know, 2050 ka Pakistan, it's 30 years from now, you're probably what, 29, 30, 31. So you'd be 50, 51. If I survive, yeah. What's your limit? Because for me, that's 40. 40 ke baad post-credit scene hai. But where would you put that number? I would not put it anywhere. The sort of stuff that I have seen in my life, it could be today, tomorrow, next second, yeah. That's a morbid thought. I hope that doesn't happen. I hope we see you at 70, 80, 90, inshallah. But 2050 ka Pakistan, you know, you're 52 years old. You're, inshallah, IG, what's the top post? IGP Pakistan? I don't know. Pakistan, what's the top post for? I think that would be it. Yeah. You're there. How do you imagine, how do you sort of picturize that Pakistan when the older generations have all gone away? This generation is now in power, and I'd like for you to contextualize really sort of the anecdotal evidence that you have of the people around you when they're in power. And the world is changing. How do you sort of see Pakistan at the time? The thing that I would want, I don't know if I'd see that, but the thing that I'd want is that I would not want us to be discussing women issues anymore. I think it should have been normal by then. It should not be, she has a ponytail and she's wearing a uniform, right? Or so she's a lady and she's wearing. So it should be a normal thing. I should not be invited to places to speak about how it is a great thing for a lady to achieve something. It should be a normal thing. Everybody should have done that, and we should have moved past on that. Right. So that the young girls who are growing up, they see they don't have to think twice. Is this for me or this is not for me? Right. So I'd want to see a more equal world, and I think we would. And I would not want like it happens now that, you know, fathers would come up to me and they're like, we have this daughter and we want her to grow up to be like you. It should be a normal thing, and the daughters should think whatever they want to be. Yeah. So yeah, a more equal world. More inclusive, more equal. More equal, yeah. 100%. That's a beautiful thought. For all genders. Yeah, 100%. Amna, thank you so much for being part of the show. This was extremely insightful. Thank you so much for your service and for everything that you do for the police force and for Pakistan. Thank you so much, Muzamil. Thank you. There's an elite police force badge on your shirt. Yeah, that is the Bediya 42-day thing that I did in Lahore, where I had to run. The SSG wala? Yeah. What was that like?
It was insanity. कहते हैं ना सांप का खून पिलाते हैं और पता नहीं क्या होता है. It was insanity. सांप का खून नहीं था, but it was almost close. They used to make us get up at like 4 in the morning, and the guy would come up. We used to live in barracks, and he would whistle. It was like January, fog, अंधेरा. और लाहौर की बहुत चुभती है ठंड, and बहुत चुभती है. And he would just whistle, and we would get out of our charpais, and we would be like, "मौत का फरिश्ता is here," and then we would start running, and we would run like 8 miles a day in our DMS shoes, and मतलब इस तरह की चीजें थी. Did you ever think यार क्यों ज्वाइन किए मैंने, क्या हर रोज सुबह उठते हुए, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, सो एवरी डे आई वुड बी लाइक व्हाई डिड आई डू दिस फॉर माय सेल्फ, बट देन एवरीबडी, इट वाज अ टीम वर्क. आई थिंक इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द ट्रेनिंग्स दैट आई हैड, एंड नॉट जस्ट फॉर मी, ऑल ऑफ द बैच. दे टॉट यू टीम वर्क. सो फायरिंग करनी है, कैसे करनी है, एरिया कैसे क्लियर कराना है, रेपलिंग करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Right, makes a lot of sense. All right, thank you so much, Amna. Thank you. And you know, I hope to see you soon, inshallah, on the show to discuss some more around police work. मैं actually ना मैं ज़्यादा डिटेल में आपके उसमें इस वजह से नहीं गया because you know we have another show coming up. Yeah. But again, thank you so much for watching, for being part of the show. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपके एपिसोड पसंद आई अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. YouTube वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाली एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलेगी. फेसबुक वाले नीचे दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल शेयर करते हैं. हम आपका गेस्ट फीडबैक भी लेते हैं, जहाँ पर बाय द वे आमना को भी बुलाने के लिए हमें वहीं से आया था रिक्वेस्ट. इसी के साथ साथ this was Muzamil Hasan. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.